But you are sitting in classroom, just look around you, the different things which are lying around you. Your bag, notebook, your book, your pen, okay, the place where you are sitting, the bench where your bench is lying on the floor, right? Look around you. ठीक है, whatever things are lying around you. आपने अपनी नोटबुक किसी प्लेस पे रखी हुई है ना, टेबल पे रखी हुई है, तो टेबल पे जब रखी हुई है, इट इज ऑक्यूपाइंग अ स्पेस. ठीक है, यू आर कवरिंग अ स्पेस. If you don't have space to keep your notebook or book, what would you do? If you don't have space to keep your bag on the side of your bench, what would you do? क्या सब चीजें आप ऐसे लैप में कैरी करके रखोगे? नो, यू कांट. ठीक है, आप स्पेस, यू वांट अ स्पेस टू कीप द थिंग्स एट अ प्लेस. ठीक है, so the space where you keep your things, where you keep your bag. Suppose you are covering this much space in your table to keep your notebook. Suppose you are covering this much place at the floor to keep your bag. Okay, here you are keeping your bag, here you are keeping your book or your notebook. Okay, and this is a space where suppose you are sitting on the bench. So such spaces, जितने भी स्पेस आपका बैग ले रहा है, आपकी नोटबुक ले रही है, आप स्पेस ले रहे हो बैठने के लिए, या फिर आपकी फ्लोर पे, ऑन द फ्लोर वेयर योर बेंच इज लाइंग. ठीक है, जहां पे आपकी टेबल पड़ी हुई है, दो स्पेसेस, ये जो हमारी स्पेस यूज हो रही है, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एरिया. इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर areas or we call it region. Okay, it's not that कि एरिया के बारे में है तो वो फॉर्मूला आएगा तभी आप एरिया के बारे में you will come to know. Sunflower has joined. Sunflower, very good beta, put on video. I have just started. So we were talking about कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो आपके पास है, या at home or in school, whenever you use any space to keep it, रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए. घर में बुक्स रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, घर में बैठने के लिए आपको स्पेस चाहिए, खाना खाने के लिए बैठे हो तब आपको स्पेस चाहिए. मदर इज डूइंग कुकिंग इन द किचन, शी ऑल्सो नीड्स अ स्पेस टू कीप अ यूटेंसिल्स इन द किचन. ओके, और स्पेस कैसी चाहिए? दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्पेस यू वांट? विल यू बी पुटिंग एनीथिंग ऑन द कर्व स्पेस? कोई आपको ऐसे स्टोन पकड़ा दे कि स्टोन के ऊपर कुछ रख लो, यू वॉन्ट बी एबल टू डू. कोई कर्व सरफेस दे दिया, कोई आपको ऐसे ब्लॉक दे दिया कि उसके ऊपर अपनी बुक्स रख लो? नो, यू वांट अ फ्लैट सरफेस टू कीप योर थिंग्स ऑलवेज. If the floor is flat, you are keeping your bag. Your table is flat, you are keeping your notebook on that. Your bench is flat where you are sitting. If it is not flat, you won't be able to sit comfortably, right? Sunflower, beta, please put up camera. Sorry, this audio. Silently look here. I've just started. I'm repeating this the things which I told you. Listen to me very carefully. We were talking about that to keep your all things, whether your school bag, whether your book, or the place where you're sitting, कोई भी चीज रखने के लिए you want a flat surface to keep it. Those flat spaces, those flat surfaces और faces, उनको हम क्या बोलते हैं? जितना वो कवर कर रहा है स्पेस, उसको हम बोलेंगे उसका वो एरिया है. It is covering this much area. Now you're sitting, the place you're sitting, it is covering this much area. You are keeping your book, you are covering this much area. ठीक है, two children are sitting on one bench. ठीक है, both of you are keeping your notebook. Your partner also wants a space, you also want a space. So those spaces, it means your registers, your notebooks are using some area of the table to keep your notebooks, right?
So these are the areas. Your bag is covering some area of the floor, जहाँ पे आपके बैग पड़े हुए हैं. Suppose you drank water, you kept your bottle on the table. Bottle also wants a space at some corner, right? So such spaces are called areas of the. किसकी एरिया होगा वो? किसका एरिया होगा? एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, एरिया ऑफ योर बैग, एरिया ऑफ योर रजिस्टर, एरिया ऑफ योर टेबल, ठीक है. तो कौन सी स्पेस जो है हम निकालने वाले हैं, किसका एरिया हम निकालने वाले हैं, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है. अभी नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड. अभी तो हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है. देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट विच यू हैव टू फाइंड अ स्पेस. आपकी क्लासरूम में बोर्ड्स लगे हुए हैं. ऑन द बोर्ड यू आर पुटिंग सो मेनी डेकोरेटेड आइटम्स. पोस्टर्स लगाए हुए हैं, ठीक है. दीज ऑल पोस्टर्स यू वांट स्पेस ऑन दैट, you want area. Now area means you can find area of your simple things, maybe a square, maybe a rectangle, right? Maybe you have made a circular thing, कोई अपने object ऐसे shape में बनाए हुए हैं, you want area for that also. तो कोई cartoon shape बनाई है on a paper, you want to put that paper on your board, classroom board, for that also you want a space. We have to find area of that also, right? So this is a mystery that how to find the area. One thing is very clear to you from these all examples, that all the things they need a space. All the things they need a space, which is an area of something, maybe area of wall, area of board, area of floor, area of your bench, and so on, right? Now suppose I have a paper with me. See, I have a paper with me. I want to find the area of this paper. I don't know कि इसका area कितना. ठीक है, area मतलब उसमें space कितनी है, कितनी space ये occupy करेगा. I want to know कि अगर मैं ये paper if I put it on maybe your board, आपकी क्लासरूम में जो डेकोरेशन के लिए बोर्ड है, और या फिर ये पेपर मैं अपनी नोटबुक पे लगाती हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच स्पेस इट विल टेक. कैन यू जज? कैसे पता चलेगा? यू वांट टू नो कि दिस पेपर विल टेक हाउ मच स्पेस. उसके अकॉर्डिंगली वी विल कम टू नो कि इसने कितना एरिया कवर किया है. There are two ways. One is the common formula which you have read already. कि this is a square piece. We know its side. We know कि this is L, L and L. Square में all the sides are equal. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको बताया गया है. It is side into side. Do you know everyone? छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, हाथ खड़ा करो. Do you know it? If you know the side of the length of, then you know how to find the area. You have read in 4th, 5th, maybe now also. But I don't know what are the dimensions of it. We don't know. We don't know कि इसकी length कितनी है. So what will you do? Other way to find its area, to know कि इस पेपर ने space कितनी ली है. ठीक है, अभी space कैसे find out करेंगे? To find a space, we need a graph paper. Have you seen graph paper? साइंस में भी यूज किया होगा आपने. रेज योर हैंड. बार ग्राफ आपने ड्रॉ किए थे ग्राफ पेपर पे. यस, यू नो इट. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल. You know what I did? On a graph paper, I put this paper, right, like this. Can you see it? On a graph paper, I put this paper to check how much space it is taking on my graph. Now, what is the use of this graph? Use of this graph is, on the graph paper, you know there are dark lines also. One, small squares are there. Okay, these dark ones. Then one more dark one.
Then again dark one. ऐसे ऐसे dark boxes हैं. Do you know it? देखे हुए हैं आपने ग्राफ पे. तो एवरी जो स्क्वायर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, राइट. We know कि one square which is drawn on the graph, it is occupying the space of 1 square centimeter. कितनी स्पेस वो ले रहा है? One square on a graph is taking 1 square centimeter of space. I want to count that how much this paper is occupying, how many squares it is occupying. Okay, let me draw it on graph paper. You can do this activity at home also, right? On graph paper, when we draw, I got a square like this. Can you see this paper? Can you see, all of you? This square? Raise your hand. Very good. It is very clear to you. You know, the same paper I drew on the graph paper, and then I counted the blocks. कि कितने blocks इसने cover किए. So I counted all the blocks. So when I counted, they are becoming 49. The square piece is covering how much? 49 squares on graph paper. This I checked. ठीक है, कैसे काउंट किया? सपोज कर लो आपके पास ग्राफ पेपर, जब आपने पेपर लगाया, आई काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and so on. I counted that there are 49 squares which are used to keep this paper. So what will be the area of this paper? पेपर का कितना एरिया होगा? Can you tell me if it is covering 49 squares? Can you see, all of you? Look here. 49 squares are used here. So 49 squares means इसका एरिया कितना होगा? 49 into 1 square centimeter is equal to 49 square centimeter. Right? Now in your classroom there are tiles on the floor. Look in the classroom floor को देखो जरा, आपके tiles लगी हुई हैं. Now all the tiles are of same size, right? The tiles are covering the floor. पूरे के पूरे floor को tiles ने cover किया हुआ है. इसका मतलब आपकी classroom का जो सारा का सारा area है, that is covered by tiles. Okay, so you must have seen when you were small, you must be playing with such blocks. Blocks के साथ खेलते थे, ऐसे वाले square blocks के साथ. When we join them, 1 centimeter square, other centimeter square. When we join them, it becomes 2 centimeter square. Okay, have you understood how this centimeter square has come? Is it clear? Now we are going to use it for the, similarly for rectangle. Suppose I draw a rectangle over here. Please draw it with me. Please draw it. We are converting it into small box. Because abhi you don't have the graph paper, you can't draw it. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suppose you have a rectangular shape. Okay. This rectangular shape, this rectangle is covering this much area. How we will find the area? By counting these squares. How many squares it is occupying? 12. So it means 12 into 1
square centimeter. It is equal to 12 square centimeter. What is that? Area of rectangle. Formula, you know it. But this formula was generated. Formula बाद में बना. But actual जो concept था, that was to find out how much block it covers. ठीक है, जितने ब्लॉक्स ही कवर करेगा उतना ही उसका एरिया होगा. So what do you mean by area? Area means if you have a rectangular piece, how much area it is covering in between? What is the space inside this rectangle? कितनी space cover कर रहा है वो? Okay? Inside the space. That is the thing. Let us write down about area. Write the definition. We will write this definition of area in 2-3 ways so that you can understand and apply it in many things. The space covered by an object. First is the space covered by an object. कितनी स्पेस ऑब्जेक्ट ने कवर की हुई है? जैसे आपको मैंने नोटबुक बोला, आपकी बुक बोला, आपके बैग बोला, या फिर जहां आप बैठे हो, या फिर आपका बेंच पड़ा है, घर में आप खाना खाते हो. हाउ मच दिस स्पेस इज टेकिंग योर प्लेट? हाउ मच स्पेस इज टेकिंग ऑन योर टेबल? दैट इज ऑल द एरिया. ठीक है. और राइट इट इन अदर वर्ड्स. Shall I write again? I'm writing over here, beta. Please write it again properly. The space covered by an object. Space covered by an object. But when you do any topic, na, it's not that you should know the formula only. और आपको सिर्फ ये नहीं कंसर्न होना चाहिए कि जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया एंड थिंग इज डन. You should understand the basic thing about that. In row section, I was asking, have you read about area? She said yes. I told what is an area. You were unable to explain me. तो आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि एरिया मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Yes. Alpha section, yes. What are you saying? माइक ऑन किया आपने? Ma'am, board is not visible. Board is not visible. Okay, okay. Just a minute. Just a minute, beta. Yeah. Just a minute, beta. I'm writing it once more. मैंने zoom किया था. अभी दोबारा इसको वापस करना. zoom किया था ना वो दिखाने के लिए. I'm writing over here. Just tell me, are you seeing it? Is it visible now? Is it visible? Raise your hand. Are you able to see now? Yes, very good. Hands down. Sulfur, row section, beta children, stop moving. Take your own places. One word to fill us. One word to fill us. Write down area, the space covered by an object. Covered by an object. What else you can say? Anybody else who want to tell me other than this? I told you the space covered by an object.
In other words, what we can say? Very good. जल्दी से माइक ऑन करके बता दो. Please write down then. Or the region, you read this word also. The region occupied by an object. This is also called area. Okay. Now, what is region? Draw a rectangle over here. This is the space in between, जिसको हम बोलते हैं region or area. Now, what is the important thing you are learning about this? Area तो पता चल गया कि हम लोग ये पता कर रहे हैं कि एक चीज ने कितनी space ली. What else you are studying about this? Very good. Tell me your own words. Lotus section. From this figure, what do you understand? One thing is very clear that if any shape is there, the space inside the shape is called the area. Inside the space. Inside the boundary. When we talk about area, it means we are talking about the space inside the boundary of anything. Okay, अगर उसके बाउंड्री के अंदर अंदर का एरिया स्पेस हमें पता चल रही है, इट मींस वी हैव कम टू नो द एरिया. कैन यू गिव मी एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ? एरिया और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? राइट डाउन द एग्जांपल्स. कैन यू टेल मी एग्जांपल? पुटिंग ग्रास इन प्लेग्राउंड. ठीक है, अगर आपने ग्रास लगाई है कहीं पे किसी स्पेस पे, विल यू बी यूजिंग एरिया? ऑलराइट, ग्रास लगाओगी, कुछ एरिया होगी, स्पेस होगी, उसका रेक्टेंगुलर होगा, मे बी सर्कुलर होगा या स्क्वायर साइज होगा, तो उसके अंदर अंदर आप ग्रास लेआउट करोगे. एनी मोर एग्जांपल? कोई और एग्जांपल दो इसका कि एरिया और कहाँ यूज होगा. वेरी गुड. रो सेक्शन. वेरी गुड. माइक ऑन करके जल्दी से बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. डूइंग पेंटिंग. पेंटिंग जब आप करते हो किसी स्पेस में, पेंटिंग करते हो ना, पेंटिंग एनी सर्कुलर और फ्लैट स्पेस. आपने पेपर के ऊपर कलरिंग की, पेंटिंग की अपने पूरे उस पे, तो आपने क्या किया? उसका एरिया कवर किया आपने पेपर का. ठीक है, और एग्जांपल दो. कोई और एग्जांपल? लुक अराउंड. आपको रूम में ही पता चल जाएगा. यू विल लुक अराउंड एंड यू विल सी मेनी एग्जांपल. वेरी गुड. प्लीज रिमेंबर वी आर यूजिंग इनसाइड पार्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वाला पार्ट हम यूज कर रहे हैं. जल्दी से. व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल. जब आप व्हाइट वॉश देखते हो आप रूम पे, वॉल पे हो रही है, विल बी यूजिंग एरिया ऑफ द वॉल? रेज योर हैंड. विल यू बी यूजिंग एरिया? Yes, very good. Hands down. Very good. Write down example. This also. See example. Whitewashing. For whitewashing also you use it. One more example, which is in your room only, which is in your classroom only. You can see putting tiles on a floor.
putting tiles on the floor. ठीक है, ये भी इसके लिए भी आप एरिया यूज कर रहे हो. तो एरिया का मतलब आप कोई भी आपके पास चीज है उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर की जो स्पेस है दैट यू आर यूजिंग, दैट इंटरनल स्पेस जो है दैट इज कवरिंग द एरिया ऑफ दैट पार्ट. ओके, नाउ let us do one question related to it. Write down one question. A boy wants to cover, it is related to area only, the floor of a room, floor of a room. ठीक है, उस रूम की आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, जैसे आप रूम में बैठे हो. वी नो द डायमेंशंस ऑफ रूम which is 3 meter wide and 4 meter long. From the dimensions you have come to know कि it is rectangular, जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग है. ठीक है, by square tiles. ठीक है, he wants to cover it with the square tiles. पूरे रूम में से स्क्वायर टाइल्स लगानी है. Size of each tile, क्योंकि वो स्क्वायर है उसकी हमें डायमेंशंस दी हुई है 0.5 मीटर. इट इज गिवन टू अस 0.5 मीटर. ओके, स्क्वायर टाइल है तो ऑफ कोर्स उसका एरिया आप निकाल सकते हो. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. You must have done such type of question in the book. Imagine करो, you have a rectangular room, you are putting tiles in that room. ठीक है, वन बाय वन यू हैव टू ले आउट टाइल्स. और टाइल का आपको साइज पता है, इट इज साइड इज गिवन टू यू 0.5 मीटर. बिग टाइल. ओके, सो हाउ विल यू फाइंड इट? क्वेश्चन, टेल मी द प्रोसेस, व्हाट वुड यू डू? sunflower section, first bench, middle row, one child come forward. Sunflower section, yes, give me an idea, what would you do? Calculation we'll do later. Tell me the things we are going to do here. क्या क्या निकालने वाले हैं? हाँ जी बेटा. No? Okay. Okay, sit down. It's okay. Anybody from lotus section? Okay. Everybody look straight. Have you noted this question? All of you? Raise your hand. Very good. Because I'm going to clear it for answer. You know, we have a room, big room, which is rectangular. Okay. We have to put tiles in this. छोटी 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 टाइल्स लगानी है पूरे रूम में. टाइल्स का साइज हमें मालूम है. So what you are going to do? You know, you are going to put inside the boundary of that room. बाउंड्री के अंदर की स्पेस आपने कवर करनी है. इसका मतलब है कि you want area of the room, area of room also you want, and area of tile also you want. Area of one tile. You want to know कि एक टाइल को कितनी स्पेस चाहिए और पूरे रूम में कितनी स्पेस है. Two things we require. Okay, now dimensions are with you. Please find out what is area of the room. Area of room. You know, length was different, breadth was different. So what kind of shape is this? Is it a square?
No, it is a rectangle. You know its formula, L into B, length into breadth. Okay, that is given to you. 3 and 4, you can find out. It is equal to 12. आपकी dimensions क्या थी? मीटर में थी, so it will be square meter. The dimensions are given in meters, so you will find answer in meters also, right? Similarly, we will find area of one tile. One tile, because we don't know how many tiles are there. That we have to find out. Area of one tile. उसकी भी dimension आपको पता है? Yes, बेटा? 12 tiles. Pardon? 24 tiles. 24 tiles. क्या किया आपने बेटा? How did you find? Ma'am, first I found the area of room, then I added the tile number of tiles in that. Number of tiles are not known to us. We don't know how many tiles are there. ये तो हमें निकालना है. Area of tile. तो area of tile क्या आ रहा है आपके पास? 0.5 था ना? Yes. Yes. तो फिर area of tile क्या आया हमारे पास? L कितनी दी हुई है हमें? 0.5 मीटर. तो एरिया क्या आएगा उसका? You know it is a square tile. Square tile. Square tile का मतलब L into L. That is 0.5 into 0.5. Please इसको दोबारा करो बेटे. थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें. Have you done this 0.5 into 0.5? No. Okay. Okay, so then do decimal calculation. You know, you have come to know how we do it. Can you tell me what is coming? 0.5 into 0.5. Who has found? Have you found, beta? No, I simply just add them. Doesn't matter. Please sit down then. Area of tile. Tile was of square shape, you know. Square में both the sides are equal. L is equal to L. It is of this kind. ठीक है? So it means L into L. जैसे rectangle में हमने L into B किया because breadth was different. Square में हम क्या करेंगे? L into L. Okay. So we are doing it 0.5 into 0.5. You know multiplication of decimal numbers? Tell me what is coming. Are you getting 0.25? Raise your hand. Are you getting 0.25? Very good. Then you have to find number of tiles. Number of tiles will be equal to area of room divided by area of tile. दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने लेआउट करना है, डिवाइड करनी है. सारी की सारी टाइल्स हमने वन बाय वन पूरे रूम में लेआउट करनी है, डिवाइड करनी है. वन टाइल, सेकंड टाइल, थर्ड टाइल, फोर्थ टाइल, ये करते 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 हमने पूरे रूम के एरिया को कवर करना है. दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट. ठीक है? प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग. ऊपर क्या है आपके पास? 12 और नीचे है 0.25. यू नो हाउ टू कैलकुलेट? डेसिमल रिमूव करो इसका. I'm doing it over here. See here, it is 12 into 100 divided by 25. 0.25. When we remove the decimal, 2 zeros will go up. Okay, now you do it in lowest term. Tell me how many tiles are coming. After this, I'll be telling you कि L into B और L into L formula बना कैसे है. We were talking about कि हमारी space हमें count करनी है, हमें number of squares count करने हैं. और वो formula L into B कहाँ से आ गया वो formula? That we are going to understand after this. What are you getting, beta? I can see hands in row section. Very good. Sulfur section first child. Very good. Ajo, very good. क्या आ रहा है बेटा? How many tiles are coming?
Ma'am, 48. 48. Very good. We are getting 48 times. Right? We will do more questions later. First, I want to take you 2 minutes more. I want to tell you how this formula has come, L into B. ठीक है, लर्न तो सबने किया हुआ है कि हाँ रेक्टेंगल में हम L into B करते हैं, स्क्वायर में L into L करते हैं. How this has come? See here, we have a suppose rectangle. Rectangle में हमने स्क्वायर्स काउंट किए थे 1 2 3 4 5. We counted like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. हमने ये ड्रॉ किया था. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, नो नीड टू नोट डाउन. वी हैड 12 स्क्वायर्स जिनको काउंट करके हमने बताया कि वन रेक्टेंगल इज टेकिंग अ स्पेस ऑफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें गेस हो गया कि इतनी स्पेस जो है हमारा रेक्टेंगल ले रहा है. वो तो हमने काउंट कर लिया. सपोज आपके पास बहुत बड़ा रेक्टेंगल है, बिगर रेक्टेंगल है, so it will be very difficult to count all the squares. It will take long time also. So what you will do, you will see 1 2 3 4 5 6 6 आपने काउंट कर लिए, and you can see it is going similarly 6 6 6 6 नीचे जाता जा रहा है. You will be keep adding 6 plus 6 plus 6 plus 6. How many times? जितना भी बड़ा रेक्टेंगल हो अब प्लस 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 करते जाओगे. ठीक है, बट उसमें भी बहुत टाइम लगेगा. So what we'll do, if it is coming 10 times, so we will do 6 into 10 is equal to 60 square centimeter. इसका मतलब कि ये क्या हुआ, नोट करो यहाँ पे. नोट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई थी, दैट मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन. जब हम एडिशन को रिपीट करते जाते हैं तो बाद में क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन. सेम नंबर को हम ऐड करते जा रहे हैं. 6 here 6 here then 6 here 6 6 6 6 ऐड करते जा रहे हैं. कितनी बार ऐड करेंगे उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दो. तो which is 6 into 10 is equal to, we will say it is 6 is adding how many times, 10 times. ठीक है, फ्रॉम हियर द फॉर्मूला इज डेवलप्ड. यहाँ पे आपके पास इस रेक्टेंगल में 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अभी जो सामने दिखाई दे रहा है. 6 into what? How many times 6 is repeating? Only 2 times. 1 and 2. 6 plus 6. Okay. This was your basic understanding. We'll be doing questions on this also. More. So see you next time, beta. Bye-bye. Everybody write down this note which I wrote here.